श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शननेशभूः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दस्याम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ॐ वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। आज हम देख रहे हैं योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण का उत्तरार्ध 20वां सर्ग। और कल इसमें हमको क्या क्या देखना है उसके बारे में विचार किए थे। वासना, कर्म और इच्छा के अनुसार संकल्पों के सर्जन से व्यष्टि जीवों को समष्टि के साथ समता का वर्णन। ये जो कहा गया वासना, कर्म और इच्छा, वासना और इच्छा में क्या भेद है? और ये वासना, कर्म और इच्छा के अनुसार जो संकल्पों का सृष्टि होता है तो वो व्यष्टि जीव में और समष्टि जीव में सम है, बराबर है। समष्टि जीव में भी यही है और व्यष्टि जीव में भी यही है। इसके प्रेरणा से संकल्प होता है, तब फिर सृष्टि होती है। सृष्टि कैसे? संकल्प से होता है, उसी का हम देखेंगे। Today we are discussing the 20th chapter of second half of Nirvana Prakarana and Yoga Vasistha. Here we will see today how are the ideas and desires and actions accordingly, how the thoughts are created, and the process is same in the individual being as well as universal being. How it is equal, same process. वशिष्ठ जी ने कहे
ब्रह्म विराट पुरुष के सत्य संकल्प के अनुसार ही विवर्त धारण करता है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र पंचभूतात्मा विराट पुरुष स्वयं जिस जिस तरह का कल्पना करता है उस तरह से ब्रह्म रूप आकाश भी विवर्त भाव को धारण कर लेता है। क्योंकि ब्रह्मा पूर्व की उपासना से मिश्रित वासना से सृष्टि के आरंभ में पंचभूतात्मक विराट स्वरूप बनकर उपासना के फलभूत पंच महाभूतात्मक विषय समष्टि का उपभोग करने में तत्पर हुआ है। अतः विद्वान पुरुष समस्त जगत को विराट पुरुष का एक संकल्प ही मानते हैं। इतना क्लियर है, कहना है ये निकाह। वशिष्ठ जी अब बता रहे हैं राम पंचभूतात्मा विराट पुरुष, ये विराट जिसको हम कहते हैं जो सृष्टि रूप है, और वह पंचभूत तो उसमें होगा, नहीं तो सृष्टि नहीं है। तो पंचभूतात्मा जिसका स्वरूप है, ऐसा जो विराट पुरुष है स्वयं जिस जिस तरह की कल्पना करता है उस तरह से ब्रह्म रूप आकाश भी विवर्त भाव को धारण कर लेता है। मतलब कहना है वो पहला जब अपने आप को सोचता है मैं हूँ, तो वह आकाश रूप में रहता है। आकाश पहला उसका रूप है। तो वह जो पहला रूप आकाश है, उस रूप में ब्रह्मा जो कल्पना करता है वो आकाश वैसा ऐसा रूप को ले लेता है। मतलब ब्रह्मा ही ले लिया, क्योंकि ब्रह्मा का स्वरूप वही आकाश था। आकाश ही ब्रह्मा रूप में दिखाई दे रहा था, और वो जैसे जैसे संकल्प करता है मैं ऐसा हूँ, तो ऐसा ही बन जाता है। एक बच्चा पैदा हुआ, उसका एक हड्डी मांस वाला एक पुतला है। वह अपने को देखा, पहले पुतला मैं ये शरीर हूँ देखा, उसके बाद उसको कोई नाम दिए तो उस नाम से प्रसिद्ध हो गया वो। और वो जैसे जैसे सोचता है ऐसे ऐसे बनता है बच्चा। उसको बताया गया कि तुमको स्कूल जाना है, तो स्कूल जाता है तो विद्यार्थी बन जाता है। खेलता है तो खिलाड़ी बन जाता है, और बात करना सीखता है तो बात करने वाला बन जाता है। तो जो जो सोचता है वह करता है, वैसे का रूप वैसा बन जाता है। और छोटे छोटे बच्चों को बहुत नचाते हैं सब बड़े लोग। जैसे कान्हा को हमारे गोपियाँ सब बहुत नचाते थे। देख मक्खन दूंगा, नाच तो थोड़ा, हाथ में रख कर देखेंगे, देख नाचेगा तब तो दूंगा, नहीं तो नहीं। तो फिर वो नाचेगा जैसे नचाएंगे ऐसा नाचेगा वो। तो संकल्प तो है मुझे मक्खन चाहिए, उसके अनुसार वो जैसे सोचता है ऐसा नाचता है। तो ऐसे ही समझो सबका, सारे दुनिया एक ही सूत्र में बंधे हुए है।
जैसे सोचेंगे ऐसा कर्म करेंगे और ऐसा रूप को प्राप्त हो जाता है। वही बच्चा आगे जा कर के फिर सोचता है मैं तो एक डॉक्टर बनूंगा, तो उसी के अनुसार उसको सारा तैयारी करना पड़ता है। कुछ दिन में वह डॉक्टर बन जाता है। और वही कहता है मैं बिजनेस करूंगा, नौकरी नहीं करूंगा, तो फिर बिजनेस चालू कर देता है। तो जो सोचता है और वो फिर उसका क्या रूप हो गया, बिजनेसमैन। और वही अगर डॉक्टर बन गया तो डॉक्टर के नाम से सब जानते हैं। कुछ नहीं बदला, खाली नाम बदला, काम बदला, सब कुछ बदला। वो ज्यों का त्यों एक व्यक्ति, वो जो है का त्यों है। और क्या बदला, बच्चा था अब जवान हो गया, ये बदला। शरीर बदला, भावनाएं बदलते हैं, रूप बदलते हैं, नाम भी बदल जाता है उसके अनुसार। परंतु मैं जो था, वो जो बच्चा पैदा हुआ था मैं करके अपने को सोच रहा था, वो मैं तो कभी नहीं बदला। तो इसी प्रकार समझो व्यष्टि जीव सबको, और ऐसे ही समझो वो समष्टि जीव भी है। पहला जो पैदा हुआ उसका एक रूप था। पैदा हुआ मतलब अपने आप को देखना सोचा, अपना एक रूप था। वो रूप कैसा था, आकाश के रूप में था, जैसे बच्चा पैदा हुआ। इसलिए तो कहाँ हिरण्यगर्भ, विराट हिरण्यगर्भ से पैदा हुआ। बहुत गोल मोल बड़ा बढ़िया बच्चा पैदा हुआ है। खूब मोटा ताजा, देखने के लिए बड़ा सुंदर है बच्चा, है ना। आकाश इसका नाम रख दिए। और उसका माँ कौन है, महद ब्रह्म। महद ब्रह्म अव्याकृत जो प्रकृति थी, वही उसका गर्भ धारण किया था। और बच्चा जब पैदा हुआ उसका नाम रख दिया हम विराट, क्योंकि मोटा ताजा खूब देखने के लिए हट्टा कट्टा है बच्चा है। बच्चा पैदा होता है कितने किलो के होते हैं, 3.5 किलो 2.5 किलो। ये बच्चा 5 किलो का है। तो देखते हैं ये इसका नाम आकाश दे देंगे। हम पप्पू देते थे, गोलू देते थे, रख दो आकाश रख दो, क्या फर्क पड़ता है। वो जो विराट पैदा हुआ उसका नाम आकाश हुआ। और व्यष्टि कोई बच्चा पैदा होगा उसका भी ऐसे नामकरण करते हैं। इसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे अपने को सोचता है वो ऐसा ऐसा उसका रूप बन जाता है। वही आकाश सोचा मैं वायु रूप हूँ, चलूँगा फिरूँगा। बच्चा अभी चला नहीं, हाँ, वो हिंडोला में झूल रहा है, चल नहीं पा रहा है। हाँ, कंधे में गोद में लेकर के सब चलते हैं। 1-1.5 साल हो गया, अरे चल नहीं रहा बच्चा, तो चलने दो ना। धीरे धीरे दीवार पकड़ के, लाठी पकड़ के, कुछ पकड़ के चलने लगी जा। गिरता भी उठता भी, हवा चलते चलते रुकता भी और चलता भी। तब कभी रोता भी है। गिर करके हवा चलने से आवाज़ तो हो गई। फिर सोचा बच्चे बहुत तेज दौड़ते हैं किसी चीज़ के लिए। कभी नया जब साइकिल सीखते हैं, देखना साइकिल कितना तेजी से चलाते हैं। एक दिन क्या हुआ, सच्ची बात, एक कोई 2 बच्चे एक दूसरे को पीछे बैठा है साइकिल में। वो कहीं से आ करके मेरे पास आ रहे थे। वो ऊपर से रोड से नीचे उतराई में छोड़ दिए ब्रेक, और जा करके ये जो मोड़ है उधर मोड़ नहीं पाए,
मुड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे, जा करके वो गोबर में गिरे। तेरी के फिर रो रो करके हल्ला कर रहे हैं, तो फिर हम जाए करके देखे, अरे क्या हो गया? जी ब्रेक नहीं लगा। अरे तू ब्रेक लगाया था क्या? भूल गया। यही हालत होता है। तो ऐसा ही भागते भागते आग पैदा हो गया। हुआ चलते चलते भागते भागते बच्चा भागने लग गया, फिर आग पैदा हो गया, रोना पीटना ये सब शुरू हो गया। हाँ, तो फिर आंसू आने लग गया, चलो पानी बन गया। ये सब विराट विराट का ये रूप बन रहा है सब। और टट्टी कर लिया तो धरती बन गया। ऐसा तो विराट का वर्णन है, और क्या कहते हैं, हम कौन सा अलग वर्णन करते हैं? वेद भी तो सब पुराण तो ऐसे ही कहे, है कि नहीं? पंचभूत तो ऐसे ही बना और पंचीकरण हो गया, फिर एक दूसरे से मिले और फिर अनंत रूप तैयार हो गया, ज्योमेट्रिकल रेशियो से बढ़ा। इसी प्रकार वो पहला पंचभूतात्मा जो है उसको विराट नाम दिया गया, और स्वयं जिस जिस तरह को कल्पना करता है उस तरह से ब्रह्मरूप आकाश भी विवर्त भाव को धारण कर लेता है। वो आकाश जो पहले था, जैसे बच्चा का एक मांस पुतला वो जैसे अलग अलग बनने लग गया, वैसे ही वह आकाश रूप ब्रह्मा जैसे जैसे सोचा ऐसा ऐसा रूप को धारण कर लिया। आकाश ही धारण किया मानो, वही तो था उसका रूप। आकाश सोल है, यूनिवर्सल लिंक है। क्या सोल? हाँ सोल क्यों नहीं है? सोल है। आकाश का भी कोई सोल होगा, वही तो ये अष्ट आकाश सोल हो गया, मून हो गया, माइंड, आइज हो गया। अभी वहाँ इतना भाग करके क्यों जा रहे हो? अच्छा। अभी तो अरे इतना जल्दी भाग जाते हो उधर मून की तरफ। सिमिलरिटी आने के लिए कोशिश करते हैं तो कहीं मिस हो जाते हैं। नहीं नहीं, बाद में वो सब बनेगा। अच्छा अच्छा। अभी धीरे धीरे बनने दो यार। हाँ। ये हिरण्यगर्भ तो हम सूर्य को भी बोलते हैं, हिरण्यगर्भ जो है, और बोलते हैं। हिरण्यगर्भ से आकाश पैदा हुआ। बोलते हैं आकाश से हिरण्यगर्भ, ये सूरज पैदा हुआ या सूरज से आकाश पैदा हुआ, एक ही बात है। आकाश मतलब आकाश तो स्पेस हुआ ना, अकॉर्डिंग टू माता जी वी आर डिस्कसिंग, वी शैल कम टू यू, डोंट वरी। हाउ द क्रिएशन स्टार्ट्स, that is what we are discussing. You see, Vasistha is explaining to Ram that the 5 elementary body, the 5 elementary body, which is known as the great being, which has originated, come out of the golden womb. Its form is sky, the space, and this being Virat, as he went on thinking, I am so, I am so, I am so, so he went on assuming those forms afterwards. So the sky became all these, because sky is the form of the great being. Understood? The sky became Many. many. It, as he went on thinking, so it became
Just as we were discussing on that, just as a child, once it has got no modifications as it is then and there. Slowly when it grows, it has a name, and then it starts talking and walking and hearing and understanding, and it knows my name is so and so, my father's name is so and so, and this is called hand. When the children learn some different language, the हाथ hand है, ये इसको क्या कहते हैं? What it is called? My head means, my head in Hindi मेरा सिर है. तो बच्चा रो रहा था, बच्चा रट रहा था. My head माने मेरा सिर है. तो उसको टीचर बोले थे माई हेड माने मेरा सिर. The teacher told my head means my head. He showed him. So the child comes and homework he does. My head means a teacher's head, because he said it is my head. So teacher's head, my head means a teacher's head. And then his brother, elder brother comes, you fool, it is not teacher's head, it is my head. मेरे सिर है. Oh, yes, yes. My head means brother's head. My then his sister, elder sister comes. Are my head means my head. Yes, my head means sister's head. He went on cramming all this. My head means father's head, mother's head, brother's head. Whatever you say, it goes on cramming, repeating it again and again. He has got no knowledge. He has to acquire knowledge from others. As he understands, he goes on repeating it. In that way, this Virat, he, just as a child, goes on modifying and assuming different forms, though he is the he never changes as he. If I am the child, I is always I. But my assumptions, my forms, my attributes, my name, my work, my behavior, everything changes every moment. And as I think, so I appear to be. When I am playing, I am a player. When I am running, I am a runner. When I am speaking, I am a speaker. So all these assumptions, according to actions forced by the thoughts, it takes the forms. So in this way, the universal being, which is known as Virat, whose form is in the beginning the sky, space, and it is luminous also, because it has come from the golden womb. It cannot be, if it has come from human womb, it will be a human child. If it has come from horse womb, it will be horse. So it is luminous and self-effulgent also. And it goes on modifying itself as it goes on thinking, I am so, I want to become so. The child goes on thinking, I will become a teacher, he becomes a teacher. He makes ready all the necessities and he becomes a teacher. He wants to become a businessman, he becomes it. And his name is now
changed. He is a businessman. He is a customer now. He is a traveler now. Every moment the name changes, actions change, everything changes. So in the same way as the individual does, it is the protocol of the universal being. The universal being also, he does the same thing that is followed by the individual beings. Because we are individual beings are the part and parcel of the universal being. So as my body does, so also the hands and legs and eyes, all the limbs, they will do accordingly. And the body is controlled by the mind. So as the mind orders or thinks, so the body and limbs will act accordingly. It is one whole total body. In the same way, as the universal being thinks, he becomes it, and by mixture of indifferent ratios, all these 5 elements, he goes on thinking in many ways, and he becomes all these names and forms, and it is limitedly called the individual being. When it is unlimited, it is the same universal being. पंचभूतात्मा विराट पुरुष स्वयं जिस जिस तरह की कल्पना करता है उस तरह से ब्रह्म रूप आकाश भी विवर्त भाव को धारण कर लेता. विवर्त मीन्स इट सुपर इम्पोजेस. It thinks I am so and so. Other example you give, just as a beautiful and very active, very clever boy, he has been selected to play the role of Rama in Rama and Rama. So the boy, when plays the role of Rama, he forgets his name. He acts just like Rama acted. Sometimes he has to weep, sometimes he has to be very grave, sometimes he has to be very aggressive. All these, he acts according to the direction of the director. And he thinks I am Ram, and he acts like a Ram. So this Rama form is assumed by the boy, and it is called superimposition. Rama is not really there, or it is attribute given to the boy for the time being. Just as the same person is named as the doctor who is the house head in his house, he is the father, and same father becomes a teacher, sometimes becomes a customer, sometimes becomes a ruler in the school. Many roles he plays, all these are attributes. He is not so. For some time, for a little time, he assumes such form and such name, and he does such actions for a moment. That's all. It changes. This is how, this is called attribute or superimposition. It is not the reality. The reality is something else. The boy is different. The child is different who knows
I in different ways, which is continuously same. I was a child once. I changed into different forms in different time. Thousands of forms I took. And now I am a monk. But I is the same. I is never changed. Did it change? No. No, by no means. I am the same. I am always the same. Sometimes I thought I am a young man. I am a player. I used to attend all sorts of sports. I am a sportsman. Javelin thrower, discus thrower, shot put thrower, three-legged walker, three-legged walk, shack walk, putting the legs in the shack. And I am the runner, relay. Achha, thank you, Mataji. Badi kripa. So in this way, I went on changing my name and form and everything. But inside, I was the same all the time. Until now, till eternity, the I will be I all the time. And this body when perishes, this I will become the eightfold body, carrier body, eightfold body. उसको क्या कहते हैं? पुर्याष्टक, भूल गए? पुर्याष्टक, eightfold body, the subtle body, or the individual soul, many things, or the self, individual self. In many terms we name it. In this way, the... Swamiji, Hanji. Swamiji, you said that the body can listen to yourself, take instructions from yourself. You can make the hand listen to you, make the body listen to you. Then what? How is Then what? yeah? I mean, how is that? How do we do that, Swami? Don't you do anything? How do you do? As you do, I also do. Everybody does like that. How do you do? If you eat, how do you eat? Do I order you to eat? You think to eat and you started eating. Who said to eat? Who ordered you to eat? And you means at that time your mind. And that also your intellect. That also your stomach. That also your hands and eyes and mouth and tongue and teeth, everything together. Every limb cooperated and the eating process went on. Who did it? Cooperatively, the whole body means the whole group did it cooperatively. It is a cooperative entity, cooperative body. So everybody cooperated and the action was done. And who ordered? Who are you? Sometimes your ego becomes mind, sometimes intellect, sometimes the body. It goes on changing.
So you have to say who does the work. It is everywhere, everybody knows it, everybody sees it. Don't you do any work? Swami, in the same way, about if you want to heal a certain part of the body, you can also instruct that part of the body to be healed. Yes, yes. Yes. So this is the same in the case of universal being and in the case of individual being. Both are same. Process is the same. And why individual being? All the individual beings. Everyone. And we can say every individual being means not only human beings. Even the animals, birds and the gods and plants, the rock even. We think it is lifeless, it cannot think. But movement is there, momentum is there, it changes. That changing phenomena itself is action. पत्थर भी चलता है, कैसे चलेगा? मनुष्य जैसे चलता है ऐसा नहीं हो, कोई बात नहीं, पर बदलता ना। जब पत्थर टूट करके अलग अलग हो जाता है, रेत बन जाता है, पत्थर ही तो रेत बनता है। वही रेत कभी 1000 साल में मिट्टी बन जाता है, और वही मिट्टी फिर पत्थर बन जाता है। वही पत्थर सोना बनता है, हीरा बनता है, क्या नहीं बनता है, सब बदल जाता है। Our thoughts are, as per my understanding, our thoughts are mainly due to the senses, 5 senses. Due to 5 senses that we have. both are cooperatively. So whatever thoughts it is there in our mind, Yes. because we hear it or we see it or we. अरे यार, ये तो बहुत मोटे मोटे बात करते हो, बारीक तो हम कितने बार विचार कर ले। देखो, जब हम कितने बार हम विचार कर चुके हैं, when the senses get contact with the sense object, eyes with the form, ears with the sound, particular senses with particular respective objects. When they get contact, they bring back an impression or memory which is stored in the subconscious mind. That is the process. So my question is a little bit different. So we have some thoughts based on the senses. That is one. Senses are not thoughts. No, Mind is thought. Because of sense we get thoughts. No. Is it? Because of thought, the senses work. Senses are incapable of doing anything. They are motivated and prompted by the mind, then only they will work. And mind is nothing but a flow of thoughts. So mind, from where it got the source of thinking? Thinking? So many times we have discussed, don't you forget it. See, the thought waves are nothing but waves only. It is named as thoughts. It is only vibratory process, and that vibratory process is known as energy. And one energy gets changed every moment, and it takes a different name. How many times we have discussed? Not necessarily because of senses. Senses are instruments. They are nothing, they are incapable of doing anything. If they are motivated or forced or prompted by the thoughts, then only they will work. So Swamiji,
when the sky is superimposing itself by air or sometimes maybe fire or maybe water, so it has got some pattern. It has got some pattern we have seen. But why our no? Then if we compare with that, then what should be the pattern of our thoughts? What should be the definite shape of the thoughts? It is all the same. That is what we are discussing, whether it is in an individual being, whether in human being, or in other beings, or in any individual being, or it is in the universal being. The process is the same. That is what we are discussing, and it is everywhere, at all time, the process is same. By one formula you can solve many sums. Formula is the same. So in this way, when the mind works, wherefrom it gets the order to work, means thought waves goes on moving. Why it moves? Who asks it to move? Big question. Yes. So before that, see the cause and effect cycle. The cause becomes effect, and that effect becomes cause for another effect. In this way, the cycle goes on, always rotating. And mind is activated by prana. Prana is activated by mind, by karma. Mind, when it does some actions, actions are prompting the prana to vibrate. And prana vibrates, then the mind in brain and in other parts of the body in different ways, they vibrate, and vibration is called action. That is what we call it blood circulation, or we can say any way according to medical science, according to philosophy. The terms are different, but the process is same. So one prompts the other, and in this way the cycle goes on. It is in a cycle. Everything is in cycle. So mind is not independent to do anything, nor the senses, nor the prana. It is in a cycle. And who, just as see, once the diesel is there, fuel is there in the engine, and you started the engine, it will go on. The generator, it goes on. You have to do nothing. It is automatic process. And it will stop only when the diesel is not there. Okay? And if it is in the cycle, the generator accumulates the fuel, and again it goes on. Then it will go on. Once it is started, it will go on. Just as some aircrafts, spacecrafts, or something, they start and they accumulate from solar energy. The engine will go on accumulating and activating. So it will go on forever. Yes. See, another physics proof. In a vacuum, if you give
a push once to a pendulum, it will go on oscillating eternally if it is not obstructed by other forces. Okay? How it gets the energy to oscillate? How? From this end, say from here you have given a push, it will go to this end if it is not obstructed, same level. This is how the waves are made. It creates its own potential. One means when it goes from this height, it has to go down and go up again to that height, isn't it? When it comes down with a force that is generated by itself, and that force it pushes up to that level again, that force. And that again when it is pulled by the gravitation, then it will come down and create another force. So it will go on by itself. Eternally it will go on. Once a push is given, it will go on. So in this way, गीता में क्या कहा भगवान? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम। मैं तो क्षेत्रज्ञ हूँ और क्षेत्र में अहम बीज प्रदः पिता। I put the seed. That seed is nothing but the will of the Absolute. Satyamedha. The will of the Absolute. I am. Let me be many. Let me see myself. So that is first seed, means a push given, and it becomes the action and change, and the same becomes the sky or Hiranyagarbha, and the action goes on. Action means the changing process, and one will be cause for the other effect. It will go on. So it is called the creation is eternal. Yesterday we saw that. And it is unending and ever expanding. Unending means ever expanding. What do you mean? Does it expand somewhere in the space? No, in cycle. The momentum is called expansion. The force or the speed or the motion is called expansion. Yes. That you should understand. It is not somewhere else, because it is one. There is no two to expand in others' territory. When a king expands its kingdom, he will attack other king and he will spread his kingdom, isn't it? But there is only one kingdom. Where to expand? If the earth wants to expand, where will it? Where will it expand? That's why it's moving. In the orbit. Is it only? That is the expansion of life. Yes, that is the meaning of expansion, Yes. and ever growing. Yes, Guruji. Whereas from a relative point of view, logically, the will of the Absolute, the will, the word will. So normally, relatively, when we understand will, वो मरने का पहले एक will लिखता है, वो एक will है. So this will of the Absolute should be understood logically. It is the cosmic prana or cosmic mind or both.
मरने के बाद बेचारा मर नहीं सकता है, क्या करे? उसको जितने मारो वो नहीं मरेगा। आकाश को मारते रहो वो नहीं मरेगा। अच्छे देवयम अदाह्यम। क्या करे? ये मरने वाला नहीं, विल किसको कर लेगा? ये विल नहीं है कहीं। We assume as if there was some thought. Thought is I several times I told you, the ideas are unconditional. They are not dependent upon time, space and conditions. Understood? Do you support the sky to exist? Just as the sky is relatively unconditional, so also the absolute also and its ideas also. Why it is so? Why it is called unconditional? Because the ghosts who came at last night, midnight, and they were dancing, they were unconditional because they were not there. It was only an assumption. It was assumed by the child. That's all. What conditions you will put on them? They were not there. वही तो बात. Can you condition the blueness of the sky? It is unconditional because it is not there. Can you condition the absence? This is how the ignorance or absence or misunderstanding or this world is ever growing, and anything you think it may appear like that. It is your thought process. That's all. How many times we have discussed, as you think of a person, it appears to you like that. The same person is your father. Can you call him my brother? He is brother to somebody. Can he become the father to that person? He is son to somebody. He is teacher to somebody. He is a customer to somebody. He is everything. As you look on him, so it appears to you. He is nothing. He is the being. Without all these are assumptions, attributes. As you see the world looks like that to you. It is not so. कितने बार हम बोल दिए पंखा अच्छा है या बुरा है? बोलो. कहाँ पे अच्छा है, कहाँ पे बुरा है? वही गर्मी में इतना अच्छा लगता है जो रात शीतकाल के अगर चल पड़ा, अरे कौन पागल है इसको चला दिया यार, गाली निकलेगा. तो वो अच्छा है या बुरा है? आज पर योर यूज, as per your need, as you see it, as you use it, it appears like that, it becomes like that for you only, not for others. इसी को तो कहते हैं इल्यूजन, माया. उसको किस रूप से हम देखेंगे बताओ? जो बच्चा एक माँ का है, सौतले माँ का ही, वो क्या है? दुश्मन है? जो मेरा दुश्मन है वो आपका दोस्त है. उसको सिखा करके आप भेजे हैं
जाकर के स्वामी जी को तंग करो। कैसे मानोगे भाई? किसको क्या मानेंगे? कोई अर्थ ही नहीं। इसको दिन रात इसको चिंता करेंगे अगर हम, अर्थम अनर्थम। इच्छा शक्ति के साथ लिंक है जो थर्ड पावर वही इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति भाई ये शब्दों का जाल है, ये हमको कहाँ का कहाँ लेकर के फेंक देता है। के लिए सब कंफ्यूजन हैं? ये शब्द के लिए शब्द के लिए सारे कंफ्यूजन। नहीं तो साइलेंस वुड हैव गिवन अस। हम देखो जिसको हम कर्म कहते हैं उसको गति बोल सकते हो क्या? बोलते हैं? समझने से गति तो है, उसको परिवर्तन बोलोगे क्या? अरे मैं काम कुछ कर रहा हूँ, वो फिलोसोफर उधर खड़ा होकर कहता देखो गतिशील है। हंसी उड़ाएंगे, कहेंगे पागल कहीं आ रहा है। When I am doing something, a philosopher says, see this man is in motion and speeding. Will you not tell him a mad fellow? But is it not right? These words make us confused. How to understand, how to use it, the same word, what is now meaningful, on other occasions it becomes meaningless and it becomes just opposite meaning of it. How? You see, we gave so many examples. Wherever you go, the example is there. See, the east becomes west. How? Whatever is east for you is west for some other people. So what will you call it? India is east to Europeans and west to Japanese. Where is India? Is it in south or north? Come on. Everywhere, unknowingly, we compare everything and then we use some words and we mean it for the time being. It is not so. It goes on changing. The same India is north to Ceylon, but south to Tibet. West to Japan, east to Europe. So where is India? Similarly, everything. See another example. You have 10,000 rupees. Are you rich or poor? Come on. When a person having 20,000 is showing you, see, I have so much money. What do you feel? You are poor. And if 500 rupees man comes before you, I have 500 rupees, you have become rich. The whole world is comparative. This is how it is called relative world. Without comparison, we don't think anything, we don't do anything, we don't understand anything. Everywhere the mind and intellect, they do it so swiftly, we are not aware of it. Same mind is not aware of it. It is automatic because of habit. एक लकीर खींच दिया, कागज में बता रहा है, वो बड़ा है या छोटा है?
उसके पास एक, उसको बड़ा बनाना है, उसको छूना नहीं, मैजिक। उसके पास छोटा लकीर खींच दो वो बड़ा बन जाएगा, उसको छोटा बनाना, बड़ा लकीर खींच दो, हो जाएगा। कंपैरेटिव टू वर्ल्ड। ऐसे ही हम सब चीज, और इसके ऊपर हमारा जिंदगी को ढालना है। वी हैव टू take it and practice it in our day-to-day life. Don't compare yourself with others, then you will be happy. If you compare with others yourself, then you are unhappy. This is the cause for all our miseries and problems. If you don't look at others, you are quite happy. We become happy or unhappy because of others. है कि नहीं? Yes, yes. This is the clue how to become happy. Don't compare yourself with others. You are ever happy. You are the happiest being under the sun. The moment you look at a happy man, more happy than you, then you say, oh, I have so many complications. What is happening in modern society now? I have one car. See, he has 4 cars. I am so miserable, so poor. My child does not, my boy cannot have a car to go to school. His boy is going to school by car. Damn my fate. Another person will also come and ask you, do you have only one car? Yes. Acha, okay. How are you managing? And when you look at the person who has a cycle only, even not a bike, oh, I have a car. I have a car. Then the conflict starts. This is how we are always after money and after growing our standard. When we take a closer look at people who seem to have everything, when we take a deep look, they can be very miserable also. अरे आजकल क्या हो गया मालूम? उसका लड़का प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। सोच नहीं सकते हैं जिसके घर में रोटी नहीं। नैताला से एक माताजी आई थी मेरे पास, मेरे लड़का ऋषिरा में पढ़ रहा है, 10,000 रुपया बाकी है, देना पड़ेगा, स्वामी जी थोड़ा मदद कर दो। अभी स्कूल तो अभी चालू हो रहा है। मैं कहा माताजी मैं मदद करूँगा, उसको टीसी ले आओ उधर से और सरकारी स्कूल में भर्ती कर दो। सरकारी स्कूल में जो कुछ ज़रूरत होगा मैं ज़रूर करूँगा। ना नहीं, उसको तो वो पढ़ा रहा है। मैं कहा वो पढ़ा रहा है तो मेरे पास क्यों आ रहा है? उसके पास जाओ ना, वो दे नहीं पा रहा है। क्या देखो लॉजिक, वो दे नहीं पा रहा है। 2 लड़के हैं, वो बड़ा लड़का को दे रहा है, छोटा लड़का को नहीं दे पा रहा है। मैं कहा तुम क्या कर रहे हो? ना नहीं मेरा पति देव उसका एक्सीडेंट हो रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। अरे जब तुम्हारे घर में नहीं है तुम क्यों जबरदस्ती? क्योंकि उसके लड़के पढ़ रहे हैं ना, मैं कैसे छोड़ दूंगा? दूसरा एक धराली कहाँ जा कर के आखिर गांव,
वहाँ यहाँ क्या है कि लड़की उधर शादी हुई। मैं तभी तो बोल रहा हूँ कि हमारा ज़िंदगी कहाँ चला गया। देखो, एक लड़की उधर शादी किया है, उसका जवाई सरकार से लोन ले करके एक होटल बनाया पैसा कमाने के लिए। होटल खाली पड़ा है, कोई नहीं आना जाने वाले, रास्ता से थोड़ा अलग है। जहाँ उसका ज़मीन था वहीं बना दिया। वो किस्ती नहीं भर सकता है, लोन का किस्ती। वो आकर के उधर छोड़ करके अपना मैत इधर है, यहाँ भी नहीं रहती। अपना मैं कुछ हूँ, मैत में नहीं रहूँगी। और दूसरे गांव में घर किराए ले करके बच्चे कितना 5-6 साल के 2 बच्चे हैं, और उनको प्राइवेट स्कूल में मैं पढ़ाऊँगी। मेरे पास आती है, स्वामी जी मेरे को मदद करो, क्यों बचपन से मेरे ही पास रही, स्वामी जी मेरे को मदद करो, मेरे बच्चे पढ़ेंगे। हम नहीं पढ़ पाए ज़्यादा, वो पढ़ी है 10वीं तक पढ़ी थी, तो हम नहीं ज़्यादा पढ़ पाए, हमारे बच्चों को तो पढ़ाएंगे। मैं कहा ठीक है, उसको ले आओ इधर, घर में रहो और इधर छोड़ दो, मैं बोलूँगा तुम्हारे माँ बाप को और मैं सारा खर्चा उठाऊँगा, उसको सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। ना नहीं नहीं नहीं, सबके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते, मैं कैसे? क्या टेंडेंसी बताओ, घर में खाने के लिए नहीं, किस्ती नहीं भर पा रहे हैं, घर कोड़ों को होगा, फिर भी मैं किराए में मकान ले करके मेरे बच्चों को रख करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊँगे, भले भूखा रहूँगी, कोई बात नहीं, पर फीस कैसे भरोगे? कर्जा करूँगी। जब वहीं कर्जा किया तो मैं क्यों नहीं करूँ? क्या सोच देखो दुनिया में हो गया। In the end of the day, this world is comparative, and this is how we live our life, and this is how we are happy or not happy. It depends upon us only. We are the creator of our fate. So this is how the universal being has created his fate. Poor fellow. He compares himself with the other creators. There are innumerable creators. How many blue dots in the sky? Can you count? Similarly, innumerable worlds, they are just floating in this air of the universe, universal air, helplessly like dustbins we see in the beam of the light at evening time in our house. You see how many dust particles, they float helplessly. Where they go, they don't know. One is clashing against the other, one is falling down, one is going up, helpless. Innumerable worlds, they are in this way in the universal sky, the ideal sky, which is greater than, 1,000 times greater than our elementary sky. The ideas are floating. As you think so, it will appear. How many universes you want to create? You can create. इसी को कहते हैं जो ब्रह्मा का सृष्टि और व्यष्टि का सृष्टि, समष्टि का सृष्टि और व्यष्टि का सृष्टि. One is
interrelated, inter-existing in the other. You are the dream objects, dream beings of the your Brahma, your grandfather. He is dreaming. And that Brahma is dream object of some other dreamer. It is linked innumerable with each other. Nobody knows where what happens. This is our real condition, real situation, our being. This is the reality. And we have given value to all our surrounding objects and subjects, and we are going on happily. Isn't it? Be happy. Why are you shouting? Why are you breaking your head? Be happy. Go on imagining. Be in your imaginary sky. Go on imagining and enjoy it. Nobody is going to disturb you. Nobody can disturb you. हाँ जी, मनोराज्य करते रहो. एंगेज करवा दो उसको, आप मौज लो. मन को लगा दो. Engage the mind to go on imagining and enjoy it. Who can obstruct you? This is what we are doing. Think, what is your age? 51. 51. Have you got anything in your hand? Whatever you have earned in the whole of your life? Nothing, zero, only present moment. When some children, they come to me, Swamiji, today is New Year Day. We shall celebrate. Yes, come on. You give me the account of your last year. How much you have eaten, how much you have drunk, how much, what you have done, how much you have eaten and how much you have thrown out. Give me account. And when the children come for birthday, I ask the same account. How old are you? Swamiji, I am 12 years old. Come on, give me all the account of 12 years. Think it seriously. What have you done in 12 years? How much you have slept? How much you have wasted your time in gossiping and doing nothing? How much you have spent time for your body cleaning and protecting it and decorating it? How much time you have spent for learning something? And how much you have spent time for God? In 12 years, say, if we take an account, hardly 4 or 5 months of a sincere student is spent for God. And if at all that student is in ashram, who cares that God? Let him go to hell. Let me play and enjoy. Who cares for God? So this is how our life is. We are just living in imagination, imaginary world. Gain nothing. We have lost everything. Lost everything. Gain nothing. Think it seriously. Is it right or wrong?
why we discuss all these out of the subject? It is not out of the subject. It is the subject, this is the world. And whatever is going on with the individual being, it is same with the universal being. There is no universe, there is no value of your universe. Useless, meaningless, worthless, hopeless. All the less is less. And that's how you see the world. इसके बाद वह कहते हैं ये क्यों है ऐसा? जैसे सोच लेता है ऐसा विवर्त हो जाता है। विवर्त मतलब एक फॉर्म को धारण कर लेता है, क्योंकि ब्रह्म पूर्व की उपासना से मिश्रित वासना से सृष्टि के आरंभ में पंचभूतात्मक विराट स्वरूप बनकर उपासना के फलभूत पंच महाभूतात्मक विषय समष्टि का उपभोग करने में तत्पर हुआ है। अतः विद्वान पुरुष समस्त जगत को विराट पुरुष का एक संकल्प ही मानते हैं। एक संकल्प, वो आनंद लेने के लिए। You see, we do everything what he is telling. The Brahma, the creator, he did penance in his last life, severe penance, and as a result of it, he is given this position of a creator. He was blessed with this boon. Yes, you will become a creator. And what for? Because he is all in all. So he will do whatever he likes. That freedom he has. That is the result of his severe penance in the last life. As a result, he has become the creator, and now he is enjoying himself. Enjoying himself means he is going on creating as per his own will. And how? Just as others are done. If you have been admitted in a particular school, in a particular class, what will be your course? Just as before. Just as the before students before you have studied, you will also study the same course. I was the 4th batch of agriculture college of our university. It was established just little before. So I had to undergo those courses what other batches had undergone, isn't it? So just as before. And now also some batches are coming out. They are doing the same thing. And if it goes in cycle, eternally it will go on. And this is how the creator is in the cycle of the creation. So many creators have come and gone, nobody knows. Just as the water bubbles in the ocean. Who has kept the account? Can you count how many bubbles are created every moment and they are burst? Similarly, the universes in the conscious sky of consciousness, चिदाकाश में
ये ब्रह्मांडों का अनगिनत भावनाएं सब चलता रहता है, कोई पूछता नहीं. Nobody cares for it. Nobody splits at it. और आपके बारे में कौन सोचेगा? सोचो तो है. कौन सा खेती के मूली, कहाँ जाओगे, क्या करोगे? कोई कहता है मैं अपना साधना करता हूँ. करो भाई साधना है. मैं तुम्हारे क्लास में नहीं आ सकता हूँ, मैं तुम्हारे आरती नहीं करूँगा, मैं अपना साधना करता हूँ. करो भाई है. मेरा मर्जी. तेरा मर्जी है और मैं मेरे मर्जी में चलूँगा, तू तेरे मर्जी में चल. सब अपने अपने राजा हैं. यही बात अगर समझ में आ जाए तो जिंदगी में सब कुछ मिल जाता है. कुछ करना जरूरत नहीं पड़ता है. कुछ नहीं करना है. सोचना बंद कर दो. कैन यू स्टॉप इट? हाँ, स्टॉप योर थिंकिंग. If you want to enjoy, go on enjoying. Nobody can interrupt you. Go on enjoying. And why are you shouting? Oh, I am in danger, I am miserable. If you shout, then only you have to come to our shop. And when what you want, we shall sell it. We have everything in our shop. Our, what is it? Mall. Supermarket. Anything you want, we shall give it. Come on. If you don't need anything, go your way. Because people are miserable. Nobody is happy. So for the sake of getting rid of all these troubles, problems, the philosophy, the darshan gives you the way. You have to think in this way so that your thoughts will subside. That's all. This is called sadhana. You have to think in a particular way which will lead you to thoughtless state. That is called yoga. What else? Chitta vritti nirodha. Yes. What else? You have to stop thinking, stop imagining, and the way is given. If you at all need it, then it is there. If you are well off with your affairs, then go on, go your way. Nobody cares. शास्त्र होता है कोई अज्ञानी के लिए नहीं, कोई बेगर जरूरत वालों के लिए नहीं, सिर्फ मुमुक्षु के लिए. जिसको चाहिए आओ, हमारी दुकान में सब कुछ है. हम कुछ भी दे सकते हैं. सुपरमार्केट, हम है डायरेक्टर ऑफ सुपरमार्केट. फिक्स्ड प्राइस. हाँ, इसमें बार्गेनिंग नहीं चलता. नो बार्गेनिंग. अरे आप तो नस पकड़ लिए. तेरी के. No bargaining, fixed price. If you have to pay, that rate is written there on the on the board. Pay it, take it. Nobody is going to ask you price. And if you don't pay and taken the object, you will be caught. It is also automatic.
The CC camera is there. It will instruct the door. The door will be closed. You are cut up. Everything is automatic, electronic. चलो और थोड़ा सा ये कह रहे हैं, इसी ढंग से पंचभूतात्मक विराट पहले जो तपस्या किया था वो उसका फल को भोगने के लिए जो उपासना के फलभूत पंचभूत महाभूतात्मक विषय समष्टि का उपभोग करने के तत्पर हुआ है, उपभोग कर रहा है। हाँ जी, यू हैव अर्नड ए लॉट, नाउ एंजॉय इट इन 5-star होटल। जस्ट ऑर्डर, everything will come to your room. Everything will be there because you have earned. तपस्या क्या है बेचारा, अभी जो सोचेगा वो दिखेगा, फलीभूत होगा और उसका वो मौज लूट रहा है। आपको मौज लूट रहा है, कमाओ। कमाओ। रामायण में तुलसीदास जी बोले तपोबल सृजत ब्रह्म, क्या बड़ा तपोबल से ब्रह्मा सृष्टि करता है, तपोबल से विष्णु पालन करते हैं, तपोबल से रुद्र संहार करता है, सब तपस्या का फल। और तपस्या है क्या? वन पॉइंटेड माइंड। व्हाट यू थिंक दैट विल हैपन। That is called austerity, penance. उसका उपभोग कर रहा है। अतः विद्वान पुरुष समस्त जगत को विराट पुरुष का एक संकल्प ही मानते हैं, इसको कोई कीमत नहीं देते हैं। दुनिया है ही नहीं, दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है। हाँ जी, मस्त में घूमो, तभी मस्ती आता है महात्मा लोगों का। अरे दुनिया में आग लग गया तो मेरा बाप का क्या गया? क्या हो गया? कुछ नहीं। एक महात्मा का झोपड़ी थी, उसमें आग लग गई, वो कहीं यात्रा में गया था, उसको बुलाया गया। वो सोचा झोपड़ी आग लग गया तो मैं क्यों आऊँ? नहीं, उनके दोस्त लोग बुलाए, नहीं भाई आ जाओ, नहीं तो गांव वाले बुरा मानेंगे, कहेंगे ये कुछ बदमाशी किया था, तब गांव वाले आग लगा दिए, आ जाओ इधर आ जाओ। महात्मा आया, देखा आग लगा हुआ है, तो उसे कोयला और उसे राख में 2 दिन ठाड़ से सोया, नींद नहीं खुलती। बहुत अच्छा हुआ ये टंटा बिटा। ये सच्ची घटना। खूब सोया, 10-12 घंटा खूब सोया। हे भगवान, क्या कितना दयालु हो तुम। थैंक यू गॉड, यू हैव सेट फायर टू माई झोपड़ी, इट वाज ए बर्डन ऑन मी। यही होता है महात्माओं का भक्ति। किसके लिए सोचना है? एक कोट है ना स्वामी जी, यू कैन फाइट विद एनीवन, एवरीवन, बट यू कैन नॉट फाइट विद द सेम। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे मेरा? लोगे? अरे हम तो मरी मराए मुर्दा है, हमको क्या मारोगे? ज्यादा से ज्यादा जेल में ठोक दोगे या शूट कर दोगे। वही में भी बहुत हम तो मरे हुए हैं, हमारा कोई रोने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ जी, क्या कर लोगे? मेरी मर्जी। हाँ जी,
हैं? भय मुक्त, फियरलेस। भय मुक्त है, तभी तो अभय दान देते हैं दूसरों को। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, किसी चीज के लिए डरना नहीं, आ जाओ। आपका ही एक स्टेटमेंट है, फिकर नॉट कैप्सूल। फिकर नट कैप्सूल, फिकर नट की 2 गोली खाओ, सो जाओ। फिकर नट, फिकर नट मीन्स देयर इज ए कैप्सूल कॉल्ड ओरी नट, so take 2 tablets and sleep nicely. ओरी नट टैबलेट। तो महात्मा लोग क्या बोलते हैं, जो समझदार हैं, जो जानकार लोग हैं, वो कहते हैं संसार को विराट पुरुष का एक कल्पना मात्र है, कह करके पल्ला झाड़ दिए। तुम रो रहे हो, मेरा सर्वस्व चोरी हो गया, मेरे बैंक बैलेंस कोई लूट लिया, हाइक कर लिए। और उन लोगों के लिए अरे अच्छा हुआ यार, अच्छा हुआ, मौज लूटो। बहुत अच्छा हुआ, चिंता गया, चाह गई, मनुआ बेपरुआय। तो इसी प्रकार सृष्टि को मानो, यथा मिट्टी आदि हेतुओं से उत्पन्न कसोरे आदि मिट्टी के स्वभाव से ही ओतप्रोत रहते हैं। कसोरे, कसोरा, अरे कुल्हड़, उसको कसोरिया बनते हैं, बोलते हैं। मिट्टी से बना हुआ जो कुल्हड़ है, क्या हुआ, मिट्टी से अलग है। तो ऐसे ही जो व्यष्टि दुनिया है, वह समष्टि दुनिया का भी, समष्टि आत्मा का भी एक ही जैसे सोचता है, एक ही जैसे करता है, सब कुछ करते हैं। यतः मिट्टी आदि हेतुओं से उत्पन्न कसोरे आदि मिट्टी के स्वभाव से ही ओतप्रोत रहते हैं, यह देखा गया है। अतः समस्त जगत के पदार्थों का कारण विराट होने से जगत भी विराट के स्वभाव से ओतप्रोत है। जो कॉज एंड इफेक्ट कह रहे थे ना आज सुबह, क्या वो शब्द क्या था, कृता कृता। कृता मीन्स whatever is done, and akrita means it is not done. Or krita is the effect, and it will have a cause before, then only it will be an effect. So every cause will have an effect, and every effect again becomes a cause for the another effect. It goes on in cycle. This is the cause and effect, or action and reaction cycle. So the individual is the model of the building, say, the universal being. So both are interrelated, interdependent, cooperated, and it is one and the same. Similarly, the cause is effect, effect is cause. Krita is akrita, akrita is krita. How can you say it is done? Because it was not done before. That's why you said it is done now.
So that not done state is cause for being done now. Isn't it? You said there is this object. Why did you say it? Because it was not before it. That's how you can say it is now here. So not being here is a cause of being here. Absence is cause for the presence, and presence is cause for the absence. Where there will be day, there will be night. When night is there, day has to come. They will go on in cycle. Absence is cause for the presence. Presence is the cause for the absence. Krita is akrita. Akrita is krita. समझ में आया? सुबह जैसे हम उसको विचार कर रहे थे। वो लास्ट में आप बोले थे वो देखता हुआ उसको दिखेगा नहीं। हाँ, देखता हुआ नहीं देखता है, नहीं देखता हुआ देखता है, करता हुआ नहीं करता है, नहीं करता हुआ करता है। Non-doer does everything and doer does nothing. वो और हमारे वेणु बाबा एक दिए मेरे को मैसेज, उसमें लिखा हुआ है द मौनी बाबा स्पीक्स। मौनी बाबा स्पीक्स। ये दुनिया भी ऐसा, और ये जो व्यष्टि और समष्टि, ये दोनों ऐसा एक दूसरे से, one is cause for the other, other is cause for the other. In this way, the individual is cause for the universal, universal is cause for the individual, and they are one and the same. They are looked from different angles and they look different, but they are one and the same. And one becomes cause for the other, and they are same thing. He gave the example of the mud pot and the mud. They are not different from each other. So tomorrow we shall see further how more and more with logic and our examples and relationships, how both are same. Hari Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Sadguru Bhagavan ki jai, Satchidananda Bhagavan ki jai, Sabda Brahma ki jai, Saraswati Maharani ki jai, Jogavasirji Bhagavan ki jai. Hari Om. अभी जो हम विचार कर रहे थे, इसको समझने से पुण्य से पुण्यमादाय पुण्य